For example, you are using, let's say, 1 megahertz, and your system is not giving you the proper frequency response against this 1 megahertz. So that means 1 megahertz is not the suitable frequency for that system, or you have to change the frequency response of the system by changing the components or the element of the system in order to proper work. This is the concept behind the frequency response, and how this is related to the impulse response, this is I already told. So somehow the impulse response is also an important factor, because we are testing our system against the worst signal available in the world. And if our system is working properly for the worst system, so we assume that any kind of signal can be applied over the system, which it will give you the proper output. So we have the relation, and we have already considered one example. Now let's talk about another example. The impulse response of the system is given ht 1 by rc e to the power minus t rc ut. By seeing this mathematical equation of the impulse response, can anybody tell me what are the elements of the circuits over which you can get this kind of response? This comes out to be ht 1 by, this is already given, the impulse response is given. Have you ever gone through this type of mathematical equation in your 12th standard or preparing during this JEE and all that? Sir, in resistance conduct combination system, sir. Resistance and Conductor. Capacitance. capacitor, right? Capacitor, please. So suppose we have a resistor and capacitor in series, right? And we found these type of mathematical equation, right? Either for current or voltage, depends upon which kind of source you are applying. So if I talk about to find out the frequency response of the system, right? So if you know the impulse response, you can easily calculate the frequency response by applying the mathematical expression h of j omega equals to minus infinite to infinite h of tau e to the power minus j omega tau d tau. And if I put the value of ht or h tau in the mathematical equation, and if you solve this mathematical equation, so you will have this 1 by rc j omega plus 1 by rc. And if you want to have the magnitude of this frequency response, so this comes out to be 1 by rc root of omega square plus 1 by rc whole square. And if I want to plot the magnitude of this, right, because this is a complex equation, you can separately plot the magnitude as well as the phase. So when I plot this magnitude, you realize that there are two extremities, minus 1 by rc and 1 by rc, leading to omega. The magnitude of this frequency response is around 1 by root 2. And the maximum magnitude is happening at omega equals to 0. At omega equals to 0, the equation becomes 1 and the magnitude becomes 1. And at omega equals to either 1 by rc or minus 1 by rc, the magnitude reduces to 1 by root 2 times of its maximum value, right? And as the frequency keep on increasing, the magnitude keep on decreasing. And of course, this is very much validated with the mathematical equation that you got. Now, can anybody actually interpret the physical sense of this kind of system? Can you comment the magnitude of the frequency response of this system? Because this is an important concept that you need to learn. Okay, let me put this question in another way. If I talk about the magnitude of the frequency response, so maximum is 1 and it keep on reducing as the frequency keep on increasing.
So that means there has to be a range of frequency over which the operation can be done, and beyond that the operation cannot be done, because the frequency response magnitude is drastically decreasing. Now can anybody tell me? Because I've already told you the answer. What is the physical sense of this kind of? Yes, Bharat is there or not? Hello, am I audible or not? Yes, sir, audible. So audible, that means somebody must answer. Okay, what I'm asking, are you getting my question or not? Because simply solving the question is not the criteria of understanding the signal and system. You must physically realize or physically adopt that how the systems are behaving for different kind of signal, and what is the role of frequency response, the impulse response, and all that. This system is restricted. This system means whose impulse response is given to. This system is restricted to a certain range of frequency or not, or you can use this system for any range of frequency. So it is restricted. Restricted over a range of which frequency? So there is a bandwidth of frequency between which we can use the system properly. Yeah. So what is that? So that is basically -1 by RC to 1 by RC, between which the power is half or something. Yes, yes, yes. And after that, the power of or the magnitude decreasing drastically, right? So that means beyond this frequency, the frequency response is decreasing drastically, or you cannot have the proper use of that. So that means before implementing any communication system, you must be knowing the frequency response. Whatever you have designed, you must be knowing the frequency response. Otherwise, there might be possible that whatever the frequency you are using, your system is not responding, or the frequency response is not proper. Then what is the use of using that system, right? And this is the important role of the frequency response while after designing a system. So in this sinusoidal steady state analysis, what we have gone through, we have gone through the concept of frequency response either for continuous time or discrete time. The meaning is same, and how you can relate the impulse response to the frequency response. And the important thing is that why we are going towards the frequency response even though we are having the impulse response, right? Now coming to the concept of Fourier, that why Fourier have used this sinusoidal steady state signal or sinusoidal complex exponential signal to analyze the different kind of signals, either they are periodic signals or non-periodic signal. They have he has divided the overall signals in two categories. One is periodic, another one is non-periodic. Now I'm just reading few lines, then you will be able to understand the actual meaning. The study of signal and system using sinusoidal representation is termed as Fourier analysis. Fourier analysis includes both the Fourier series as well as the Fourier transform. So whenever you study the signal system using sinusoidal representation, remind this thing. Sinusoidal representation means we are talking about the complex exponential sinusoids, that is e to the power j omega t. And the reason I already told why he has taken this signal, because
you can preserve your original signal even after the number of mathematical operations which is going to be performed by your system. Now the important thing is that there is a word called weight, W-E-I-G-H-T. What is the concept of this weight? We try to understand, and we try to relate the concept of Fourier series as well as the Fourier transform. So we can represent a signal as a weighted superposition of complex sinusoids. If such a signal, try to understand the concept of this word, we can represent a signal as a weighted superposition of complex sinusoids. That means we can represent any signal which is in existence in the world. It could be either periodic signal or it could be aperiodic signal, right? As divided by or subdivided by the Fourier. So we can represent that signal as a weighted superposition of complex sinusoid. मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ, कोई भी सिग्नल दुनिया में है, चाहे वो पीरियडिक हो चाहे नॉन पीरियडिक हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स का वेट अगर डाल दें, ठीक है, weight is a kind of factor which is multiplied to a particular term, right? For example, if I am writing yt and if I am writing a by t, so a is the weight associated by that y of t, right? कौन है भाई ये? इतने नॉइजी एनवायरनमेंट में आप मुझे सुन रहे हैं? Is it practically possible to listen my voice? Anyway, कौन था ये? I wanted to know. अच्छा, छोड़ के चले गए, वाह. मैं इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ और आप छोड़ के चले गए, ऐसा मत करो भाई. Somebody others? Yes, sir. Who is this? Who is this? KY? KY or KV? What's your name? Kunal? Kunal, are you getting my voice? Kunal? Is there any Kunal in the meeting? Okay. If you are not there, so it would be better for me to remove from the meeting. Definitely, I'll remove you, Kunal. Okay, bye-bye, Kunal. Okay, so what I was telling, that any signal can be represented as a weight or weighted superposition of complex sinusoid. And if such a signal is applied to a linear system, remind one thing, why Fourier has done this, the concept behind this, if such a signal is applied to a linear system, the output is weighted superposition of systems response to each complex sinusoids. इसी लाइन को समझना है हम लोग, ठीक है? मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन. Because you have already gone through the Fourier series and Fourier transform in the past as a part of mathematics, but till now you didn't know that why you are studying all those things, right? तो पहली लाइन ये है कि सिग्नल और सिस्टम की स्टडी अगर हम कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड से करते हैं तो उसको फोरियर सीरीज, फोरियर एनालिसिस बोलते हैं. फोरियर ने क्या किया, सिग्नल को दो पार्ट में डिवाइड किया, ईदर पीरियडिक और नॉन पीरियडिक. दोनों ही सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने क्या बताया, एनी सिग्नल थ्रू आउट द वर्ल्ड कैन बी represented as a weighted superposition of complex sinusoid, right? And
इफ सच ए सिग्नल, अगर अब उस सिग्नल को मैंने क्या किया, कोई भी सिग्नल आपके पास था जिसे हम अप्लाई कर रहे थे किसी सिस्टम को, हमें कुछ आउटपुट मिल रहा था, बट अब उसी सिग्नल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है, weighted superposition of complex sinusoids. Now that means that signal will have a single component or number of components. Yes. Number of components. Number of और number of components उसमें होंगे, और सपोज करो a plus b plus c d up to, तो हर एक पार्ट में क्या होगा, Complex sinusoid. एक कॉम्प्लेक्स साइनोसाइड होगा और उसका अपना क्या होगा, एक Weight. वेट होगा खुद का। जैसे फॉर एग्जांपल एक टास्क करना 10 लोगों को दिया जाता है, ठीक है, 10 लोगों को दिया गया, लेट्स से फ्रॉम 1 to 10, ठीक है, बट उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए हर किसी का रोल इक्वल नहीं रखा जाता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है किसकी कैपेबिलिटी कितनी है, ठीक है। सो सिंपली हर किसी का वेट यहाँ सेम नहीं होगा, अलग अलग वेट होगा सबका, राइट, अलग अलग वेट के साथ उनको ऐड कर देंगे तो ओवरऑल टास्क परफॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर लिसनिंग अ सॉन्ग, राइट, एंड एक सॉन्ग को बनाने के लिए क्या क्या, you require number of musical instruments, right, but whether all the instruments are being played for entire duration of your song or depends upon कि कब किसको बजाना है। Sir, it depends. It depends, ऐसा जरूरी नहीं है कि गिटार पूरे गाने में ही बजेगा या ढोलक पूरे गाने में बजेगी या सिंथेसाइजर, it depends, किसी का बेट ज्यादा होता है किसी का कम होता है, right? So this is how the Fourier deals. ऐसा क्यों किया, बिकॉज he wanted to take the advantage of the linear system. क्या था लीनियर सिस्टम की विशेषता, लीनियर सिस्टम में एक अप्लाई करोगे एक आउटपुट मिलेगा, दो सिग्नल अप्लाई करोगे दोनों के करस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेंगे, तीन अप्लाई करोगे तीनों के करस्पॉन्डिंग। लीनियरिटी क्या कहती है, राइट, लीनियरिटी समथिंग लाइक आपने x1t अप्लाई किया आपको y1t मिला, x2t किया y2t मिला, अगर आपने ax1t प्लस bx2t apply किया, then you will get ay1t plus b/2. This is called linearity. So if any signal in the word can be represented as a weight of superposition of complex sinusoid, and these kind of complex sinusoids are being applied to a linear system, the output will of course is a complex sinusoids of different weights, and that depends upon the सिस्टम रिस्पॉन्स, बिकॉज सिस्टम भी तो अपना कोई रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, तो हर कोई वेट के साथ फाइनली आपको आउटपुट आ गया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई इसमें, ठीक है। सी हाउ, सपोज करो मैंने e⁻j⍵t अप्लाई किया, राइट, एक सिस्टम को, तो e⁻j⍵t के साथ आपको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, ये मैंने पढ़ाया हुआ है साइनसोइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस में, क्या मिलेगा आपको, पीछे ही पढ़ा है इसी में। If you apply e⁻j⍵t, what will you get? e⁻j⍵t multiplied by its frequency response. Frequency response. तो ये frequency response बेसिकली क्या है उसका, ये उसका वेट डिनोट कर रहा है कि नहीं? Yes, sir. The original signal which you have applied, that was e⁻j⍵t. At the output you are getting something multiplied with e⁻j, and that something is nothing but this is the weight of that particular signal, ठीक। तो अभी तो मैंने एक ही चीज अप्लाई की, एक ही e⁻j⍵. सपोज करो मेरे पास there could be number of complex sinusoid superposition in the input, तो आउटपुट में भी क्या मिलेंगे आपको, number of complex sinusoidal in the output along with their different weights, होगा ना। ये लाइन जो मैंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाली आपको बताई थी वो यहाँ लिखी हुई, base associated with a sinusoidal of given frequency represented the contribution of their sinusoids to the overall signal. हर किसी का अपना अपना रोल है, अपने अपने रोल के हिसाब से हमें उनका कंट्रीब्यूशन पता चलता है, ठीक है। एंड दिस इज हाउ
the Fourier decided to deal with the linear system. तो इस बेसिस पर फोरियर ने अपना जो एनालिसिस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. एक को बोलते हैं फोरियर सीरीज, दूसरे को बोलते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म, राइट. And since we are dealing with continuous time and discrete time system as well, so they are now four. Number one is continuous time periodic signal. अगर periodic signal के साथ डील करेंगे so this is your Fourier series. Discrete time for periodic signal के साथ डील करेंगे so this will be DTFS, that is discrete time Fourier series. Continuous time non periodic signal के साथ करेंगे तो वो Fourier transform होगा, और discrete time non periodic signal के साथ करेंगे so that will be your DTFT, that is discrete time Fourier transform. अभी तक अगर किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो he or she can ask, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट आपको एक बार समझ में आ गया, फिर तो सिर्फ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनको आपको सॉल्व करना है, नथिंग एल्स. बट एटलीस्ट यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द Fourier series and the Fourier transform. Is it okay for everybody? Yes, sir. So now I'll start one by one. First, Fourier series for continuous time, then Fourier series for discrete time, then Fourier transform for continuous time, and Fourier transform for discrete time. Okay. So number one is periodic signal Fourier series representation, which is your either continuous time or discrete. Representing a periodic signal as a weighted superposition of complex sinusoid, since the basis superposition must have the same period as the signal, right? This is again, there is an important word. Since the weighted superposition must have the same period as the signal, original signal का जो time period होगा, right? वही जो weighted superposition हम बना रहे हैं वही उसका होगा. That is not going to be changed, right? That means each sinusoids in the superposition must have the same time period of the signal. That means this implies that the frequency of each sinusoid ये इंपॉर्टेंट लाइन. इसका मतलब क्या हुआ? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच साइनसॉइड, एक सिग्नल लिया वो पीरियडिक था, उसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया? वेटेड सम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स, और उसका जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी होगा वो आपने जो ओरिजिनल सिग्नल था उसका फ्रीक्वेंसी सेम होगा. तो इसमें जितने भी कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, बट उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो किस तरह रिलेट होगी? देयर frequency of each sinusoids must be an integer multiple of the signal fundamental frequency. Got the meaning of this? Yes. Hello. Yes, sir. Okay, fine. तो अभी हमने क्या किया है, एक एग्जांपल के तौर पर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल लिया. उस सिग्नल लेट से हमारा था x of n, अब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल साइनसॉइड्स. उसका नाम दे दिया x cap n. x cap n पे मैंने क्या बोला है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस सिग्नल को वेटेड सम ऑफ कॉम्प्लेक्स. तो वेट मैंने ले लिया ak और कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स ले लिया e to the power j k omega naught n, where omega naught, capital omega naught is the fundamental frequency of xn, or capital N is the time period of the signal. The frequency of kth signal is k omega. तो ओरिजिनल सिग्नल था xn, उसको वेटेड सम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड से रिप्रेजेंट किया, तो उसका नाम रख दिया मैंने x bar n. ठीक. Similarly, if you want to represent this in terms of I mean for continuous time for a series, तो वो हो जाएगा x cap t summation of k ak e to the power j k omega naught t. Again these are the same thing. 2 pi by t fundamental frequency है, ak उसका weight है. ठीक है.
राइट नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट ये जो k होना चाहिए इसकी लिमिट क्या होना चाहिए, कोई बताएगा क्या? व्हाट शुड बी द लिमिट ऑफ k? मैंने और आपने बोल तो दिया कि कोई भी सिग्नल जो हमारा पीरियडिक है उसका वेटेड सम ऑफ कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स के सुपरपोजिशन में रिप्रेजेंट है, बट हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स? k का मतलब है लिमिट ऑफ k मींस हाउ मेनी कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स आर सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट द ओरिजिनल सिग्नल, दिस इज द क्वेश्चन. Sir, minus infinity to plus infinity. Okay, anybody else? Sir, k equals to 1 to infinity. That means there will be infinite number of terms. In which kind of signal you are talking about, continuous time or discrete time? Sir, continuous. Continuous. What about discrete? Sir, discrete also it will be same, that is infinite number of terms will be there. Okay, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ समझते हैं, ठीक है. सी, मेरे पास ओरिजिनल सिग्नल था इधर xt और xn, x कैप या x हैट t का मतलब है हम उसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं y the means of the concept given by the Fourier, that is any signal can be represented by the weighted sum of this ak is the weight and e to the power j omega t k e to the power j k omega naught t is the complex sinusoids, right? Now let's see, हम डिस्क्रीट की बात करते हैं. पहले डिस्क्रीट में e to the power j k plus n omega naught n. See this one, मैंने क्या किया है, k की जगह k plus n लिया है और omega naught n लिया है और इसको ब्रेक करके यहाँ पर लिखा है e to the power j 2 pi n and e to the power j k omega naught n अगेन. तो ये e to the power j 2 pi n जो है इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आएगा आपके पास e to the power j k omega naught n तो आ गया e to the power j n n आएगा और ये ओमेगा नॉट आएगा इंटू n आएगा. ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई बाय कैपिटल n रख दिया, कैपिटल n कैंसिल आउट हो जाएगा e to the power j 2 pi n. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बता सकते हैं? 1 सर. 1. इसका मतलब ये हुआ कि e to the power j k plus n omega naught n is equals to e to the power j k omega naught n. So how many complex sinusoids actually required to represent the approximate signal? कितने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उतने के बाद वो अपने आप को फिर से रिपीट करने लगे. क्यों? जो अप्रोक्सीमेशन हम कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्या है? वी आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स अलोंग विद द डिफरेंट वेट्स is required to represent the original signal, or we are approximating that. But the question is that how many complex sinusoids along with the weights are required. So after each and after n, k को मैंने k plus n put कर दिया. We are looking for the limit of k. से फिर सिग्नल हमारे पास आ गया, ठीक है. So how many number of complex sinusoids now required to represent this? n से काम चल जाएगा क्या मेरा या नहीं? कैपिटल n, क्योंकि उसके बाद वही रिपीट होना है, तो हम लोग क्यों बार बार उसको निकाल. So that means there are only n capital and distinct complex sinusoids of the form e to the power j omega n. A unique set of n distinct complex sinusoids is obtained by knowing the frequency index k. ठीक,
तो इसका मतलब अब जो अप्रोक्सीमेशन मेरा था वो हो जाएगा समेशन ऑफ k इंडेक्सिंग ऑफ n, ak this is called indexing of n, or k is ranging on any value of n, right? अगर हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो n-1 तक जाएगा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो कहां तक जाएगा? क्यों भाई? टोटल हमें n चाहिए, total n consecutive values will give you the original signal. This is what we have already proved. So n distinct complex sinusoids is able to represent your original signal. तो k हमारा 0 से n-1 तक हो सकता है, n minus n/2 से n/2 minus 1 k की जो रेंज है वो कैपिटल n से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या कैपिटल n ही सफिशिएंट है हमारे लिए, ठीक है? So this is all about the concept for Fourier. Now Fourier for discrete, Fourier series for discrete. Now in case of continuous time, complex sinusoids e to the power j k omega naught t with distinct frequency k omega naught are always distinct. ठीक है, हर बार ये अलग अलग होगी, k omega naught are different. Therefore practically an infinite number of, अभी आपने जो बोला था, किसी ने बोला था minus infinity, but this is true only for continuous time. Infinite number of distinct form in the series which can approximate your xt. So x cap t is now summation of k equals to minus infinite to infinite ak e to the power kj. ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है उसको मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं आपको, ठीक है? सिग्नल सिस्टम की स्टडी जो हम e to the power j omega naught t के साथ करते हैं, this is called Fourier analysis, right? And Fourier has divided the signal in either periodic or non-periodic. उसके बेसिस पर हम लोग चार चीजें पढ़ते हैं: continuous time Fourier series, discrete time Fourier series, continuous time Fourier transform, discrete time. Fourier series deals only with the periodic signal, whereas the Fourier transform deals with periodic and non-periodic signal, right? So in Fourier series, what they do, they want to represent a periodic signal which is a weighted sum of complex sinusoids, and now we are looking for that how many number of weighted sum of complex sinusoids are required. So in case of discrete, the n total n number of complex sinusoids is capable of representing the original signal, whereas for this continuous time, the infinite number of complex sinusoids are required to represent the original signal. Is it okay for everybody? Yes, sir. Okay, Yes, sir. fine. Now coming to the Fourier series representation for continuous time, right? So linear combination of harmonically related complex sinusoids. We know that periodic signal is nothing but that is xt equals to xt plus t for all values of t. Of course, xt is a periodic signal with positive value of capital T called fundamental time period, and 2 pi by t is known as fundamental frequency, right? Now, how will you represent this harmonically related? So mathematically, the linear combination of harmonically related complex sinusoids of the form x of t summation of k equals to minus infinite to infinite. अब वहां जो ak था, now this is represented by this. This is called the Fourier series coefficient ak e to the power j k omega naught t, right? Now in order to find out this ak कि वो weight कितना होना चाहिए, we have a mathematical formula, capital 1 by capital T integration for a period t naught to t naught plus capital T xt e to the power j k omega naught t dt. So we have two mathematical formulas. One is for original signal x of t. How will you write the original signal x of t? So practically we do not go for infinite number of complex sinusoids, but theoretically, if you want to represent the original signal exactly with the help of
number of complex sinusoids or weighted complex sinusoids. So you require infinite number of complex sinusoids. But practically it depends, either you can use 20 terms, 30 terms or 50 terms in order to get the actual x of t or approximate x of t. इसका मतलब ये हुआ कि x of t मेरे पास एक पीरियडिक सिग्नल था. पीरियडिक सिग्नल डजंट मीन इट इज अ साइनसॉइडल सिग्नल. ये आपको सभी को पता. इट कुड बी एनीथिंग. वो ट्रायंगल भी हो सकता है, वो एक पल्स भी हो सकता है. इट कुड बी इन अदर शेप आल्सो, बट the periodicity must be mentioned, something like xt equals to xt plus capital T. तो अभी मैंने किया उस पीरियडिक सिग्नल को, कोई भी पीरियडिक सिग्नल था, उसको कन्वर्ट कर दिया एज a weighted sum of complex sinusoid. क्यों किया? Because we wanted to get the benefit of applying those kind of signal to a linear system, so that at the output we will have the original signal, and which is nothing but have a weight of the response given by the particular system, right? तो जो weight हमारे पास निकल के आएगा. Now the question is that the approximation, because xt को जब complex sinusoids के form में represent कर रहे हैं, so what exactly we are doing the approximation. तो अगर exact आपको xt चाहिए in terms of weight and complex sinusoid, तो आपको infinite number of complex sinusoid लेने पड़ेंगे, which is not practically possible. But उसका almost आसपास चाहिए approximation, so you can take 10, 20 or depends upon your requirements. ठीक है, तो हमारे पास k की लिमिट आ गई है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और जो आपका ak है which is also there. ठीक है. Do you know the meaning of harmonically related system or harmonically related complex sinusoids? कोई बताएगा क्या मीनिंग? हेलो. नो सर. तो मैं जब से बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तब तो आप कोई जवाब नहीं दे रहा. 4 बार मैं ये वर्ड बोल चुका हूँ, हार्मोनिकली रिलेटेड कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड. Sir, the frequencies are the integral multiple of some fundamental frequency. Very nice, exactly. Something like e to the power j omega naught t, दूसरा होगा e to the power 2 j omega naught t, तीसरा होगा e to the power j 3 omega naught t and so on. Because आपको जो आपको दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है? e to the power j k omega naught t. So k is a harmonic factor. ठीक है, तो जितने भी आप कॉम्प्लेक्स साइनसॉइड्स लेंगे, ठीक है, उसमें वेट सभी का अलग है, विच इज योर AK, और उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अलग है, सॉरी उसकी हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी अलग है, e to the power j, but this is somehow related to the fundamental frequency of omega. ठीक है. आपने कभी फील किया है, अगर आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, उसके अंदर जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, ठीक है, एक म्यूजिक कंपोजर जो होता है, अगर वो बोलता है 5 लोगों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाओ, और कोई एक सिंगर से गाना गा रहा है, तो म्यूजिक कंपोजर जो होता है वो, बिकॉज ही हैज द नॉलेज ऑफ हाउ यू हैव टू प्ले द ईच एंड एवरी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एट विच टाइम, तो सुन के तुरंत बता देता है कि ये वाला बंदा गलत बजा रहा है, या ये सही बजा रहा है, या नहीं बजा रहा है. इवन हम लोग भी कई बार फील करते हैं कि नहीं यार, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है. वाई? क्या सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही फ्रिक्वेंसी पे बजते हैं क्या? No, sir. No, they are at different frequency, but they must be harmonically related. ठीक है, तभी तो हम बोलेंगे हार्मनी है. हार्मनी मीन्स व्हाट? हार्मनी वर्ड का मीनिंग क्या है? एक फैमिली में हार्मनी है सभी का, तो इसका मीनिंग क्या है? Sir, well balanced है. वेल बैलेंस्ड है, सब लोग एक दूसरे की भाषा समझते हैं, है ना? इसी तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ है, कब किसको बजना है, कब किसको बंद होना है, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है, दे ऑल मस्ट बी इन हार्मोनिक्स. ओनली देन यू फील कि हाँ म्यूजिक हमें अच्छा लग रहा है. अदरवाइज कोई कहीं बजा रहा है, किस अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग चल रहा है, तो फिर नहीं अच्छा लगेगा, राइट?
तो ये हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस क्या होंगी क्या नहीं होंगी, इन सब की बातें करेंगे हम लोग आगे की। दिस इज द वन फॉर्म ऑफ योर कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, सॉरी कंटिन्यूस टाइम फोरियर सीरीज। इसके बाद की बातें आगे करेंगे हम लोग, ठीक है। कल मैं लीव पर हूं तो मैं कल क्लास नहीं लूंगा, ठीक है। और परसों मैं कोशिश करूंगा अगर मैं टाइमली पहुंच गया तो आई विल कंडक्ट क्लास, अदरवाइज ये आपकी दोनों क्लासेस कल और परसों की मैं संडे को लूंगा, ठीक है। और कोई किसी तरह का एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि हम लोग यहाँ हैं वहाँ हैं, क्योंकि आप सब लोग घर पे हैं, ठीक है। कल तो मैं नहीं ले पाऊंगा बिकॉज आई विल बी इन ट्रेन, राइट। एंड for Friday I'll try to conduct your class. If not, then I'll conduct both the classes on Sunday, right? Sunday around either 11 or 12 I'll disclose or I will inform you. Okay, fine. Yes, sir. No, thank you. You can leave the meeting. Thank you for joining. Thank you, sir. Thank you, sir.